Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I'm also good. Alhamdulillah. As I'm your friend, Afaz Zafar, and you are at the best platform, Smart Concepts by AZ, where you will get the smart concepts with the help of me, with the help of you. So, starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial, we are going to start chapter number 1 of Cambridge IGCSE D1 International Edition. Starting from the chapter number 1, that is primes, highest common factors, and lowest common multiple. So, where we will see the first topic, that is primes, because our first exercise is going to deal with that topic. हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसको डील करने जा रही है. So we will learn firstly primes. It means we have to learn about the prime numbers. As you know, since your childhood, के prime numbers होते क्या हैं? Okay, so I'm going to explain first, then I'll explain the questions one by one. Because if you will not get the concepts of primes, so how you will get the concept of these questions? So be in touch, because I'll make super easy concepts for you in which you will enjoy. So let's take a start with the prime numbers. Okay, students, tell me, what are the prime numbers? Prime numbers are basically self-dependent. Surprised? Maybe you may surprise. Prime numbers are basically self-dependent. क्या मतलब है इसका? भाई सेल्फ डिपेंडेंट क्यों है ये? सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है ये बड़े खुददार नंबर होते हैं. लेट्स गोना गिव यू वन एग्जांपल. एक एग्जांपल देता हूँ आपको. अब जैसे बच्चों आप लोग कहते हैं कि भाई हमने किसी के घर नहीं जाना, हमने सिर्फ अपने ही घर में रहना है, ना हमने मामू के घर जाना है, ना हमने नानी के घर जाना है, ना हमने चाचू के घर जाना है, किसी के भी घर नहीं जाना. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं. तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. तो सेम प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, अपने या वन के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते. और इसमें से हमें चेक करने हैं either which is the prime number or which is the composite number. And what is composite number? It is opposite to prime, because ये वो numbers होंगे जो दूसरों के टेबल में आ सकते हैं, and these are the numbers which are self-dependent. Clear? Are you getting my point? So starting, firstly I'm going to give you one example. Let's suppose there are some values which are the prime numbers. Starting with the 2, because 2 is the number which is self dependent, जो अपने टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता. 3, 5, 7. Now tell me, is there 9? No, because 9 comes in table of 3, so we cannot take the number 9. तो हम 9 नहीं ले सकते, क्योंकि वो किसके टेबल में आ जाएगा? वो आ जाएगा भाई 3 के टेबल में. और हमें तो वो नंबर चाहिए जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, क्योंकि 3 3 9 हो जाता है, तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम वो नहीं ले सकते. 11. अब आप 11 देखें. इट डजंट कम इन 2, इट डजंट कम इन 3, इट डजंट कम इन 4, 5, 6, 7, 8. किसी भी नंबर में नहीं आता, सिर्फ 11 मंजा 11. So these are the basically numbers which comes in their own table. Clear? So now we are going to start with the question, which is our first part, that is 87. Now we have to get the idea either this is a prime number or a composite number. So let's take a start. Okay ji, so our first part is 87. Now we have to get the idea that either it is a prime or composite. So how we'll get the idea? Okay, as you know that there are two sections in the exams, P1 and P2, and in one paper calculator is not allowed.
ऑब्वियसली यू कैन गेट द आइडिया विद द कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर से तो पता लगा सकते हैं कि 87 किसके टेबल में आता है, या अपने टेबल में आता है, या किसी के टेबल में नहीं आता, आप पता लगा सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर आप इतना बड़ा नंबर कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या ये बाकी नंबर्स के टेबल में आता है या नहीं आता। तो इसके लिए छोटी छोटी शॉर्ट टिप्स हैं, इसको आपने रिमेम्बर करना है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गई सो योर लाइफ विल बी इजी। ओके, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद द शॉर्ट टिप्स। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे एक साइड पे कॉलम बना लेना, ठीक है। अब आपने करना ये है, स्टार्ट कर ले आप कहाँ से, 2 से। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। ओके, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, हम ये सबके स्क्वायर निकालते जाएंगे। लाइक नाउ आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ 3, देन आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ 4, 5, 6, 7 टिल देन। कब तक निकालूंगा, जब तक मैं 87 के करीब नहीं पहुंच जाता, ठीक है। अब देखो मैं करता क्या हूं इसमें। नाउ विल गेट द स्क्वायर ऑफ 3 in which will multiply 3 multiplied by 3 equals to 9, 4 square equals to 4 multiplied by 4 equals to 16, 5 square equals to 5 multiplied by 5 25, 6 square equals to 6 multiplied by 6 36, 7 square equals to 7 multiplied by 7 49, 8 square equals to 8 multiplied by 8 equals to 64, and 9 square equals to 9 multiplied by 9 equals to 81. Now if we will take the square of 10, then you see that this value will be increased. Now 100 we got, but we cannot take this value because it exceeds from 87. We'll take that value which will be less than 87, जो 87 से कम होगी। वो किस पे आई है, ये है आपके पास। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू तो आप नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। ये किस पे आया, 9 पे, 9 के स्क्वायर पे। तो अब आपने यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। अब 9 से पहले जितने भी नंबर है वो आपने नोट कर लेने हैं, बट 9 से पहले कौन से नंबर जो सिर्फ प्राइम है। अब जैसे देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है तो हम ये नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 is not a prime number because this is even number, 7 is a prime number, 8 is not a prime number. So tell me which are the prime numbers, 2, 3, 5, 7 and 8 we will not take because this is not a prime number, and also 10 we will not take because I told you that we will take those numbers जो 9 से क्या होंगे ऊपर, जो 9 से छोटे होंगे, क्योंकि 9 पे ही 81 आ रहा था तो हमने 9 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सेलेक्ट कर लिए। अब ये हमारे पास सारे नंबर यहाँ पे मौजूद है। अब हमने इनमें चेक करना है कि भाई 87 इसमें आता है या नहीं आता। अब इसकी भी शॉर्ट टिप्स होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, या ये 5 के टेबल में आता है, या 7 के टेबल में आता है, या किसी के टेबल में नहीं आता, ये या सिर्फ अपने टेबल में आता है। सो हाउ यू विल गेट द आइडिया, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम टू सॉल्व दिस, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करें। तो आप क्या करेंगे, विदाउट कैलकुलेटर जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर सम रूल्स। अब वो रूल्स क्या है, वो रूल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो ये जरा आप देखें रूल्स और फिर मुझे बताएं कि इससे आप क्या आइडिया लगाते हैं। ओके जी, नाउ देयर आर डिविजिबिलिटी रूल्स। आवर फर्स्ट रूल इज इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8, अगर आपके पास लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो क्या होता है, वो 2 के टेबल में आता है वो नंबर। अब आप देखें यहाँ पे जो नंबर था वो क्या है, 87, ठीक है। 87 के लास्ट में क्या है, 7,
तो वो टेबल में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है वो 87 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर जितने भी नंबर लिखा हुआ है, जो मैंने नंबर लिखा लाइक 87 है, 87 को जब आप प्लस करें, अगर उसका आंसर 3 के टेबल में आता है, इट मींस 87 भी 3 के टेबल में आएगा, बट वी विल चेक लेटर ऑन। अच्छा, नेक्स्ट रूल, इफ द लास्ट नंबर इज द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो वो 5 के टेबल में आएगा। ठीक है, अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर किसके टेबल में आता है, वो 5 के टेबल में आता है, लेकिन इसके लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज ऑफ 7। 7 में क्या है कि अगर आपके पास 7 वाले टेबल में या 7 वाले किसी भी नंबर में, जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ था 87, तो हम इसका लास्ट नंबर को कर देते हैं डबल, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट नंबर को हम क्या कर देते हैं माइनस, और हमें पता लग जाता है कि क्या वो 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। बट आई विल एक्सप्लेन दैट, maybe you are not getting this point, but whenever I will explain, then you will get the idea that either it is divisible by 7 or not. Okay ji, so these are the rules which you have to remember. Okay, so now we will see that our first rule is going to follow. यहाँ पे क्या फर्स्ट रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि नहीं? फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 के टेबल में आएगा। नाउ वी विल सी द नंबर इज 7, 7 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो 0 2 4 6 8। सो वी विल सी एज द लास्ट नंबर is odd, so it is not divisible by 2. odd means लास्ट नंबर odd का मतलब ये है कि अगर ये odd होता है, odd का मतलब ये होता है कि जो 2 के टेबल में नहीं आता। 7 is not divisible by 2, so it means the whole number is not divisible by 2। ठीक है, अगर हाँ लास्ट में 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता यहाँ पे, तो it means then it comes into, otherwise no। Okay, the next rule is saying that if we will plus the numbers like 8 and 7, now we are going to check about 3. Now we are going to check out 3, that 8 and 7 equals to 15, because 8 plus 7 equals to 15. This is for which number? For 3. And this is for which number? For 2. Fine. Firstly we have to check about 2, then we will check of 3, then 5, then 7. Fine. Okay, 3. For 3 we have checked 8 plus 7 equals to 15. And you know that 15 comes in the table of 3. 3 के टेबल में तो 15 आता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 15 के टेबल में आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे? देखिए 87 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 2 7 इधर आ गया, देन 3 9 जा 27, तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो इट मीन्स 87 comes in the table of 3, but how we got the idea? हमें कैसे आइडिया मिला कि ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? तो इस तरह से हमें आइडिया मिला। टेबल ऑफ 3 में चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं प्लस। इफ द आंसर इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस द होल नंबर कम्स इन 3। गॉट इट? सो इट मींस it comes in the table of 3. So now tell me, this is a prime or composite? Obviously this is not a prime, because prime number is self dependent, but it comes in 3. ये वाला टेबल जो है, ये वाला जो नंबर है हमारे पास किसके टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? composite number. So you will write over here it as it is divisible by 3, so
It is a composite number. Fine. So we got the idea that 87 is a prime or composite. So obviously this is a composite number. Now moving on to the B part. Okay students, our next part is 67. Now again we'll check that either it is a prime or composite number. So firstly we'll go on this step. यहाँ पे आप लोगों ने अगेन स्क्वायरिंग ले लेनी है सबकी। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी ली हुई थी तो इसको मैंने इरेज नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 67 से कम हो रहा है, जहाँ पे 67 से एक्सीड कर रहा है वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, जहाँ पे 67 से बढ़ जाएगा वहाँ नहीं लेना। तो देखते हैं कहाँ पे आ रहा है भाई, 16, 25, 36, 49, 64 एंड देन 81। तो इसका मतलब 81 नहीं हो सकता, हम कौन सा लेंगे 64। 64 जब होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे नीचे वाले जितने भी नंबर है ये वाले सेलेक्ट करेंगे, बट इसमें से कौन से जो सिर्फ प्राइम होंगे 2, 3, 5, 7। ये 8 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 64 आया था, सो लेस देन 8। ओके जी, अगेन 2, 3, 5, 7। Okay, now we'll check one by one that either it comes in 2, 3, 5, 7 or no. Okay जी, so let's take a start from the 2. क्या ये 2 के टेबल में आता है? If in the last there is 0, 2, 4, 6, 8, then it comes in 2, otherwise not. It means in the last there is an odd number, so it does not divisible by 2. So you will write as the last number is odd, so it is not divisible by 2. Okay, now we'll check of 3. This is for what? For 2. Now we will check for 3. For 3, how we will check? We will plus these numbers, we will add these numbers. If we will get the sum which comes in the table of 3, then it comes in 3, otherwise no. How? If there is a number 67, because 6 plus 7 equals to 13. 13 does not divisible by 3. Fine. So it means this is also failed. Now we will check for 5. For 5, what is the condition? If the last number is 0 or 5, then it comes in 5, otherwise not. So check over here that the last number is 0, no. Last number is 5, no. The last number is 7. So it doesn't come in 5. So you will see that as the last number is not 0 and 5. So it is not divisible by 5. Now we'll check in 7 because the last number is 7. For 7, what we will see? For 7, firstly we'll take this number 67, then we will double the last digit. How we will double the last digit? 7. Double of 7 is 14. So it means we will just do the double of last number and we will do minus from the first number. It means the first number is 6. Firstly we will double the last number 7. Double of 7 is 14. Then we will minus from the first. 6 minus 14 equals to plus minus minus. For 6 minus 14 equals to 8. But of which sign? Minus, because greater value है minus sign. तो बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस है, आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे आप देखें -8, क्या वो 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता।
so it means also does not divisible by 7, so it means if this is a prime number. ये किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा, so it is a prime number. Got it? Okay जी. Moving forward to the next part, which is 73. Okay students, so our next part is C, which is 73. Again we are going to follow the same rules. So firstly we will see that at which table will get the value little bit less than 73. जहाँ पे थोड़ी सी भी लेस हो जाती है वहीं तक हम उसकी वैल्यूज को कंसिडर करते हैं. So 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. So 81 exceeds from 73. So we will get where we'll get till which value? 64. It means 64 is again it fine. Now we will take those values which are less than 64. 64 से जो कम वाली हम वो लेंगे. Again we will, but we will select the prime numbers. सिर्फ हमने कौन से लेने? Again prime numbers which are 2, 3, 5, 7. Why we are not taking 8, 9, 10? Because it exceeds. Fine. Okay जी. So firstly check by 2. क्या ये 2 के टेबल में आएगा? So I'm going to tell you that directly that it doesn't come in 2 because the last number is not an even number. This is an odd number, so it doesn't come in 2. So what you will write? It doesn't come in 2. Now we'll check in 3 that either it comes in 3 or not. So 7 plus 3 equals to 10. So it means 10 doesn't come in 3. This number is also will not come in 3. For 2, what we will do? Last number is an odd, so does not divisible by 2. Now for 3, we will plus these values. 7 plus 3 equals to 10. 10 is not divisible by 3. So it 73 also doesn't come in 3. Fine. So now we will check in 5. Obviously in 5 there should be a last number 0 or 5. So you can tell directly that it doesn't come in 5 because last number is not 0 and 5. Now we'll check in 7. For 7, how I will check? For 7, now firstly we will write the value 73. As I told you the rule, firstly you will double the last number. What is the double of 3? 6. Minus from the first, 7 minus 6 equals to 1. 1 doesn't come in 7, so it means the whole number doesn't come in 7. So it is a prime number. Clear? Yes students, clear or not? समझ आ रही है आप लोगों को अच्छे से? मजा आ रहा है? अभी मजीद मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में. चले जी, इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, विच इज 91. अब मैं दिखाता हूँ क्या ये 91 भी प्राइम है या ये कॉम्पोजिट है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 91. So okay my dear students, we got the next part that is 91. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये भी बाकी नंबर की तरह जिद्दी है या फिर ये किसी के टेबल में आ जाता है. चले जी स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर 2. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. सब यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है. क्यों?
क्योंकि हमने कौन से नंबर लेने हैं, जो 91 से छोटे हैं, और वो कहाँ तक स्टॉप हो रहे हैं, 81। 81 किस पे आ रहा है, 9 पे, बट वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम उससे कम वाले लेंगे। और वो कौन से हैं, अगेन सेम नंबर्स 2 3 5 7, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द 2 as the last number is odd। ऑड है ना भाई, इसमें ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, so it means it doesn't come in 2। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वन 3, for 2 for 3। okay, what strategy we will apply for 3, that we will take 91 and we will plus these values 9 and 1 equals to 10। नहीं आता भाई 3 के टेबल में, is not divisible by 3, so it means the whole number, it means so 91 also doesn't come in 3। fine, okay जी। the next one in 5। अब बच्चों बताएं कि 5 में कैसे चेक करेंगे, अगर लास्ट में 0 होगा या 5 होगा, तो दोनों ही नहीं है भाई। अगर यहाँ पे 0 होता 90 बन जाता तो 5 के टेबल में आ जाता, अगर यहाँ लास्ट में 5 होता तो 95 बन जाता, तब भी 5 के टेबल में आ जाता। बट अभी यहाँ पे 1 है, ना ही 0 है, ना ही 5 है, तो इसका मतलब ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। सो यू कैन राइट दिस कंडीशन बाय योर ओन। ओके, अबाउट नेक्स्ट नंबर दैट इज 7। अब हम 7 में चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके जी, सो 91 इन 7 फॉर 7। ओके जी, जल्दी से बता दो क्या करते हैं 7 के लिए, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। बिल्कुल हम वही रूल अप्लाई करते हैं जो हमने बचपन में अप्लाई किया था। क्या रूल अप्लाई किया था, फर्स्टली वी विल डबल द लास्ट नंबर, द डबल ऑफ 1 इज 1 का डबल क्या होता है 2, किस में से माइनस कर देना है, द फर्स्ट नंबर में से 9 माइनस 2 इज 7। क्या 7 के टेबल में 7 आता है, बिल्कुल आता है, 7 1 द 7। तो इसका मतलब है जब इसके टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर किसके टेबल में आ रहा है, 7 के नंबर में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्राइम तो ना हुआ, ये कौन सा बन जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। सो आप लिखेंगे एज 91 is divisible by 7, so it is a composite number। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स फिर मजा आया आप लोग को, यकीनन आया होगा, और अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत कहीं पे कोई मसला हो रहा है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इशू होगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन विद ब्रीफली। ओके, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन D1 सीरीज। तो जुड़े रहें इसके साथ, इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।